personal mail. All right. Hi, everyone. This is Vishwajit. We'll start in a couple of minutes. We'll give some time for folks to join. But in the meantime, if you are able to hear me fine and see me fine, then please give me a thumbs up or give me some sort of confirmation. You can drop a message in chat as well. All right. I have enabled the settings, so hopefully you will be able to drop a message. So if you are able to see me fine or hear me fine, you are able to. Okay. All right. Awesome. We'll start in 30 seconds. Okay. All right. So let's get started, guys. Again, good evening. My name is Vishwajit. I'm founder here at Queco. Queco is an online tax planning and filing platform for individuals. And over next 4 or 5 days, tens of millions of people will be filing their income tax returns. Already millions of people have filed their income tax returns. A lot of customers use Queco to file their income tax return. Over last several years, we have partnered strongly with Dhan. Dhan is a leading broker, and when they started building out the platform, the very early requirement was we want to solve taxes for our customers, right? So we ended up partnering with Dhan. Last several years, tens of thousands of Dhan customers come and use Queco to do their taxes. So we thought, why not do a webinar where we share some of the basics of taxation, but then also deep dive into taxation for investors and traders. And at the end, I'll show you a small demo where you can see how you can file your taxes using Queco. Right. This is that time of the year. I am getting a lot of calls from my friends and family. They know I do taxes. So a lot of them call me if I can help them, guide them, nudge them in the right direction to file their taxes. So I thought we could do it for a larger community. So super excited. Over next 45 days, 45 minutes, my agenda includes, let's see if I can go to the next slide. My agenda will include, I'll very quickly talk about income tax return. I mean, Gen Z are a huge part of our user base now. A lot of very young people are now entering workforce. They're also starting to invest, trade. A lot of Dhan customers are very young, right? So we'll start from some basics, and then we will fast forward to some of the tax-related discussions for investors and traders. I'll also share all my learnings. What am I hearing from the street from customers who are filing their income tax return? Things like that. The second agenda includes why you should file ITR. I think there is the most common question is my TDS is deducted. My employer is deducting TDS from my salary, so there's no need for me to file ITR. We're gonna bust that myth. You still need to file ITR. We're gonna talk about ITR filing due dates. I think it's amply clear now. Because of जो last year के mid term budget में announcements हुए थे, उसके कारण काफी सारे capital gains tax rates में changes आए थे, and that has a domino effect, and उसके कारण tax filing due dates extend हुए हैं. हर साल ये ड्यू डेट्स 31 जुलाई होते हैं. इस बार ये ड्यू डेट्स एक्सटेंड होके 15 सितंबर है. आई नो everybody is wishing for an extension, but if you are somebody who likes to stay organized and do your taxes on time, then don't wait till 15th of September. What also happens is आखिरी 2-3 दिन में tens of millions of people are trying to file their income tax returns. Income tax department के server slow down करते हैं. Refund processing भी slow down होता है because so many returns are getting filed. People like us who are helping people file returns are also extremely busy. So it's always a good idea to do it a few days in advance, right? It's still not late. I'll also discuss what are all the documents जो tax return file करने के लिए चाहिए होंगे.
My dad keeps this thick a file with all the documents. So sorry, you don't need that many documents. So I'll also simplify that for you. Nowadays, अगर आप इनकम टैक्स पोर्टल से प्रिफिल करते हो तो आपका 90% डेटा आपके इनकम टैक्स रिटर्न में आ जाता है. वी हैव इंटीग्रेटेड विद आवर ब्रोकर पार्टनर्स लाइक धन. सो वहां का ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन आपके इनकम टैक्स रिटर्न में आ जाता है. तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, बट विल कवर सम ग्राउंड देयर एज वेल. Now, I'll discuss five income heads. Specifically, capital gains में काफी changes आए last year. Also, a lot of taxpayers are confused के recently Parliament में government ने new income tax bill pass किया, उसके क्या implications है? So I'll clear those doubts out for you. We'll look at the tax rates for AY 25-26, which is what we are filing returns for. I'll help you understand how to choose old versus new regime. ये काफी common question है. Some people are used to opting for old regime because उन्होंने SIPs करके रखी है ALSS funds में. Their insurance agents are there at their home every year asking them to buy policies which are tax advantaged. So I'll give you a mental framework. I'll give you a way to analyze कि आपको old regime या new regime कौन सा choose करना चाहिए. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट CBDT चेयरमैन लास्ट ईयर जब उन्होंने अनाउंस किया था तो ही सेड मोर देन 75% पीपल आर नाउ ऑप्टिंग फॉर न्यू रिजीम. तो दैट इज वन डेटा पॉइंट टू गो बाय. नाउ इफ यू आर प्लानिंग टू स्विच द रिजीम, so then there is a form called Form 10IA that you are required to file. So I'll also shed some light on it. अभी क्विको के थ्रू जो कस्टमर्स फाइल कर रहे हैं उसमें सबसे अक्यूट पेन पॉइंट इस फॉर्म 10IA. कहीं कस्टमर्स को फाइल करना है वो पता नहीं है, कहीं पे कस्टमर्स ने गलत फाइल कर दिया है एंड दे कम टू अस. सो आई विल शेड सम लाइट ऑन दैट एज वेल. नाउ ITR फॉर्म्स काफी डिस्कस टॉपिक है, बट इस साल थोड़ा उसमें कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है स्पेशली फॉर इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स. तो मैं उसके बारे में भी बात करूंगा बिकॉज इन्वेस्टर्स नाउ कैन फाइल ITR 1. सो आई विल डिस्कस दैट एज वेल. नाउ मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हाइल फाइलिंग ITR. जैसे मैंने बोला, मैं फाउंडर हूँ एक टेक्स प्लेटफॉर्म का. आई कंटिन्यूसली गेट लॉट ऑफ फीडबैक फ्रॉम माय टीम. क्या प्रॉब्लम्स कस्टमर्स फेस कर रहे हैं, क्या कॉमन मिस्टेक्स कस्टमर्स कर रहे हैं. तो आई विल शेयर सम ऑफ दोज विथ यू. So hopefully we can learn from other people's mistakes. And then finally, I'll give you a very quick demo of how to file using ITR. So if that sounds like a good agenda, I think I'll try to bring. I've been running text platform for last 10 years, so I'll try to bring all the anecdotes and insights and all my learnings. So hopefully it will be an interesting next 45 minutes. So please stay with us till the end. Awesome. So let's get started. Now, everybody would नो इनकम टैक्स रिटर्न, बट आई गिव यू एन ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव. मेरा ऐसा मानना है कि इनकम टैक्स रिटर्न एक आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है, राइट. नाउ जैसे बच्चों का रिपोर्ट कार्ड होता है वैसे ये आपका पर्सनल फाइनेंस रिपोर्ट कार्ड है. क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ? बिकॉज मैं काफी बिजी हूँ अपने वर्क में, अपने फैमिली में. मेरे यंग किड्स है, ट्रैवलिंग में बिजी हूँ, मेरे एल्डरली पेरेंट्स है उनके साथ बिजी हूँ. तो मेरे पास टाइम नहीं है अपने पर्सनल फाइनेंसेस को रेगुलरली मैनेज करने का, राइट. तो मेरे लिए इनकम टैक्स फाइलिंग एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है साल में एक बार, जब मैं अपने पर्सनल फाइनेंसेस पे रिफ्लेक्ट करता हूं. जैसे कि मेरे इनकम्स क्या हो गए, एक्सपेंसेस क्या हो गए, राइट. नाउ यहाँ पे एक्सपेंसेस स्विगी एंड जोमेटो वाला एक्सपेंसेस की बात नहीं हो रही है. यहाँ पे एक्सपेंसेस अराउंड चिल्ड्रंस एजुकेशन हो गया, या ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो गए, या इफ आई एम प्लानिंग टू बाय अ हाउस तो उसके रिलेटेड एक्सपेंस, या इफ आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस हो गए. तो इनकम टैक्स फाइलिंग मेरे को एक यूनिक अपॉर्चुनिटी देता है जहां पे आई कैन सिट डाउन एंड लुक एट माय पर्सनल फाइनेंसेस. आई कैन इवेल्युएट वेदर मैं अपने पर्सनल फाइनेंशियल जो गोल्स हैं उनके साथ अलाइन हूं कि नहीं, एंड अगर मेरे को कुछ एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत है तो आई कैन मेक दोज एडजस्टमेंट्स एज वेल. अब फॉर्चुनेटली टैक्स फाइलिंग यूजुअली फर्स्ट क्वार्टर में होता है. अप्रैल में जून जुलाई इज ऑलमोस्ट फर्स्ट क्वार्टर. तो hence it also coincides with the right time कि जहां पे आपको डिसीजन लेना चाहिए, बिकॉज ये फाइनेंशियल ईयर का बिगिनिंग है. तो यहाँ पे अगर आप डिसीजन लोगे तो आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर में उसका बेनिफिट मिलेगा, राइट. सो आई लुक एट टैक्स फाइलिंग एज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन माय पर्सनल फाइनेंशियल ईयर, एंड उसका मैं फुल एडवांटेज लेता हूँ. आई ऑल्सो डू द सेम विथ माई डैड. हम लोग साथ में बैठते हैं, मैं उनका रिटर्न फाइल करता हूँ. आई ऑल्सो गाइड हिम. कुछ डिसीजंस उन्होंने लिए है, रेंटल पे कोई प्रॉपर्टी ली है, कोई प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन किया है. तो आई ऑफन टाइम्स अराउंड टैक्स फाइलिंग हमारे ये कॉन्वर्सेशंस होता है. सो आई थिंक that's my take on tax filing, which is why you should file income tax return, right? So
अब इनकम टैक्स रिटर्न है क्या? ये एक रिपोर्ट कार्ड है, जैसे मैंने बोला। आपने इनकम अर्न कर लिया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, आपका टीडीएस डिडक्ट हो गया है, आप जस्ट ये रिपोर्ट कर रहे हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। सो उनके पास जो डेटा है उसके साथ वो रिकंसाइल हो। इफ बोथ द पार्टीज अग्री, योर refund गेट्स प्रोसेस्ड और you end up paying any outstanding liability. If the parties disagree, then earlier only income tax department had a way कि they can send you a notice. Now AIS के थ्रू आपके पास भी ऑप्शन है कि जहां पे आप जाके इनसाइट पोर्टल पे उनके पास जो डेटा है उसके साथ डिसएग्री करो. So I'll also shed some light on AIS later in this discussion. All right. Now personal income tax return has to be filed annually. अनलाइक अगर आप स्मॉल बिजनेस रन करते हो तो जीएसटी रिटर्न आपको फाइल करना पड़ता है एवरी मंथली या क्वार्टरली डिपेंडिंग ऑन स्कीम. अगर आप रेंट पे करते हो तो आपको टेनेंट आपके लैंडलॉर्ड का टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है एवरी मंथ एंड रिटर्न फाइल करना पड़ता है एवरी क्वार्टर. अनलाइक दैट इनकम टैक्स रिटर्न साल में एक ही बार फाइल करना है. एंड इंडिया फॉलोज अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर, राइट? 1 अप्रैल से 31 मार्च. सो एवरी ईयर 31 मार्च खत्म होने के बाद आपके पास 4 महीने आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए. सो दैट I think explains to you what income tax return is. Now let's very quickly go to why you should file income tax return, right? मैंने तो एक अपना रीजन बताया जो यहाँ पे लिखा हुआ है. Most importantly, it's a good personal finance habit, so I already covered a lot of ground on that. बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको रिफंड क्लेम करना है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए बिना आप नहीं कर सकते, राइट? अब मैंने कहीं पे स्टेटिस्टिक्स पढ़ा था, आई थिंक इकोनॉमिक टाइम्स या फाइनेंशियल एक्सप्रेस का स्टेटिस्टिक्स था कि जहां पे टैक्स पेयर्स लास्ट टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर left something like 27,000 crores of tax credits unclaimed. Now, ये गवर्नमेंट के लिए तो लॉटरी है, लाइक, बट इट्स मनी ऑफ कॉमन हार्डवर्किंग पीपल लाइक यू एंड मी. तो अगर आपको वो टैक्स क्रेडिट्स अनक्लेम्ड नहीं छोड़नी है, अगर आपको रिफंड क्लेम करना है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा. कैरी फॉरवर्डिंग ऑफ लॉसेस. नाउ मार्केट में पार्टिसिपेट करना माने प्रॉफिट एंड लॉस, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट स्टोरी, राइट? तो अगर आपने लॉसेस अक्रू किए, ये साल आपको लॉसेस हुए ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में, although I'm seeing a lot of customers have last financial year was a good year for traders investors. If you incurred losses, then in that case, there are two things with losses. एक, आप ये लॉसेस को करंट ईयर के इनकम्स के सामने ऑफसेट कर सकते हो, जिससे आप अपनी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर सकते हो, विच विल इन टर्न आपकी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करेगा, राइट? दूसरा कि अगर आपके इनफ इनकम्स नहीं है जिनके सामने ये लॉसेस सेट ऑफ हो सके, तो आप ये लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं. नाउ अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो इन दोनों में से कोई भी फाइनेंशियल एडवांटेज आप नहीं ले पाएंगे. ना तो आप लॉसेस सेट ऑफ करके आपकी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर पाएंगे, ना तो आप इनको कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, बिकॉज आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है. नाउ कुछ लोगों को पेनल्टीज एंड इंटरेस्ट का डर होता है, तो वो भी आई हैव मेंशन हियर कि देयर आर इंटरेस्ट पेनल्टीज अगर आप का आउटस्टैंडिंग टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा है, जो कभी कभी मैंने देखा है ट्रेडर्स में फ्रीक्वेंट होता है, बिकॉज आपके कैपिटल गेन्स है जो 10,000 रुपए से ज्यादा टैक्स लायबिलिटी अक्रू करते हैं, तो उस केस में देयर आर इंटरेस्ट पेनल्टीज. एंड देन देयर आर ऑल्सो लेट फाइलिंग फीस, राइट? अगर आप टाइम पे फाइल नहीं करते तो देयर इज अप टू 5,000 रुपीज पेनल्टी, राइट? सो if you are a real investor trader, then you don't want to leave even a penny on table, right? Let alone 5,000 rupees. So for that reason, you should file ITR. Now, it's also an important legal document and income proof for loan and visa applications. काफी frequently क्या होता है, we procrastinate, and जब last moment पे जब कोई traveling trip होगा and visa के लिए income tax return चाहिएगा, या eventually plan किया होगा कि now we are buying our first house and उस time पे income tax return होगा, तो लोग हमारे पास आते हैं, नॉक करते हैं कि भाई मुझे आज का आज 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए. नाउ इट्स नॉट पॉसिबल. अप अंटिल फ्यू इयर्स अगो यू कुड फाइल धनाधन 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न, बट नाउ यू कैन ओनली फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर करंट असेसमेंट ईयर, राइट? अर्लियर असेसमेंट ईयर के लिए आप दो ही तरीके से रिटर्न फाइल कर सकते हो. एक कि असेसिंग ऑफिसर आपको अलाउ करे, परमिशन दे आपको पोर्टल के थ्रू रिटर्न फाइल करने का, या दूसरा आप एडिशनल इनकम्स एंड टैक्स पे करना चाह रहे हो, एडिशनल इनकम डिस्क्लोज कर रहे हो और एडिशनल टैक्स पे करना चाह रहे हो, तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट राजी है, वो आपको आईटीआर यू फाइल करने देगा, राइट? बट अदरवाइज अगर आपको रेगुलर रिटर्न फाइल करना है तो आप नहीं कर सकते हो 1 साल से पुराना. ओके, सो अगर आपको 3 साल के इनकम प्रूफ दिखाने हैं कहीं पे, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स टाइमली फाइल करने होंगे.
I think last point we already discussed. So I'll now go to ITR filing due dates. Now this is now open secret. 15 सितंबर है इस बार डेडलाइन, जो हर बार 31 जुलाई रहता है। ये एक्सटेंड होने के रीजंस भी मैंने शुरुआत में डिस्कस किए, बट लास्ट कपल ऑफ ईयर से, इनफैक्ट लास्ट 3 साल से ये ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुआ था। लास्ट टाइम ये कोविड टाइम पे एक्सटेंड हुआ था। अब उसका रीजन है बिकॉज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी काफी स्केल अप किया है उनके सिस्टम्स को, प्लेटफॉर्म को। तो जो पुराने जो मेमोरीज है कि भाई टैक्स पोर्टल क्रैश हो गया लास्ट, देखो वो लास्ट 3 साल से नहीं हो रहा है। एंड देन देर आर ऑल्सो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स लाइक क्विको, जो वो बर्डन शेयर करते हैं। तो लास्ट 3 ईयर से ये डेडलाइन एक्सटेंड नहीं हो रहा था, बट लास्ट ईयर बिकॉज फाइनेंशियल ईयर ने फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि कैपिटल गेन्स के टैक्स रेट्स चेंज हो रहा है, तो उसका थोड़ा डोमिनो इफेक्ट है, जिसके कारण इस बार ड्यू डेट एक्सटेंड हुआ है। तो ये ड्यू डेट अभी 15 सितंबर है। आई नो सोशल मीडिया में काफी न्यूज घूमती रहती है कि ड्यू डेट एक्सटेंड हुआ है। वन ऑफ माई टीम मेंबर वाज शोइंग मी अ ट्विटर हैंडल कॉल्ड इनकम टैक्स पैरोडी, जिसमें ड्यू डेट एक्सटेंड हुआ था, राइट? बट अभी एज ऑफ दिस मोमेंट ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुआ है। सो 15 सितंबर इज ड्यू डेट, यू हैव 3 or 4 days टू गो। नाउ क्या आप 15 सितंबर के बाद रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। आप 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हो, बट उसके कुछ नुकसान है। मैं आपको वो बता देता हूँ कि आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो 31 दिसंबर तक, उसके बाद तो आप रिटर्न ही फाइल नहीं कर सकते। बट बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के कुछ नुकसान है। एक तो नुकसान है, लेट फाइलिंग फीस भरना पड़ेगा आपको। दूसरा, जैसे मैंने बोला, अगर आउटस्टैंडिंग टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा है तो यू विल हैव टू पे इंटरेस्ट। थर्ड, यू विल नॉट बी एबल टू टेक सर्टन बेनिफिट्स। जैसे कि आप ओल्ड रिजीम में अगर ऑप्ट करते आए हैं पास्ट फ्यू ईयर्स से, तो आप ओल्ड रिजीम ऑप्ट नहीं कर सकते ड्यू डेट के बाद। अगर आप कैरी आपके लॉसेस है तो आप लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, राइट? तो ये सारे डिसएडवांटेजेस है बिलेटेड रिटर्न फाइल करने के। सो आई वुड सजेस्ट यू फाइल योर ओरिजिनल रिटर्न बिफोर 15 सितंबर। ओके, नाउ जस्ट इन केस यू फाइंड अ मिस्टेक, कभी कभी फॉर्म 16 में रिवीजन आता है, कभी कभी यू डिस्कवर समथिंग दैट यू फॉरगॉट टू रिपोर्ट इन योर इनकम टैक्स रिटर्न, तो देन यू कैन स्टिल रिवाइज योर रिटर्न अप अंटिल 31 दिसंबर। नाउ रिवाइजिंग में कोई पेनल्टी नहीं है, बिकॉज उस केस में आपने ओरिजिनल रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं, राइट? तो रिवाइज रिटर्न यू कैन फाइल टिल 31 दिसंबर 2025। ओके, अगर आपके ऑडिट एप्लीकेबल है, जो कि काफी कम ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स को अब एप्लीकेबल होता है, तो अगर ऑडिट एप्लीकेबल है तो ड्यू डेट इज 31 अक्टूबर। ओके, अदरवाइज इट्स 15 सितंबर। नाउ लास्ट ईयर 9 करोड़ रिटर्न्स फाइल हुए, उसमें से सिर्फ 40-50 लाख रिटर्न्स ऑडिटेड रिटर्न्स थे। तो आप समझ सकते हैं कि ज्यादातर लोगों को 15 सितंबर इज द ड्यू डेट। ओके, नाउ व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू फाइल? आई थिंक पैन एंड आधार तो बहुत ही ऑब्वियस है, बट यहाँ पे एक एक नुआंस जो लोग मिस कर जाते हैं, बिकॉज एवरी डे मैं अपनी टीम के साथ एनालाइज करता हूँ सारे इश्यूज जब कस्टमर्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इश्यूज इज पैन एंड आधार लिंक नहीं होता है लोगों का, राइट? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने मैनी एड कैंपेन्स रन किए, थिएटर्स में एड कैंपेन्स रन किए कि पैन एंड आधार लिंक करना जरूरी है। अब आप बैंक अकाउंट भी ओपन नहीं कर पाएंगे अगर आपका पैन एंड आधार लिंक नहीं है। तो अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर यू लिंक देम। इट्स वेरी इजी, आप इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके पैन आधार लिंक कर सकते हैं। एंड दे कीप एक्सटेंडिंग दैट डेडलाइन, बट इट इज फॉर न्यू पीपल हु आर अक्वायरिंग पैन और आधार। नहीं, हमारे आपके और मेरे जैसे लोग जिनके पास ऑलरेडी है, वी शुड गो एंड लिंक इट ऑलरेडी। नाउ ऑफ कोर्स यू माइट से के जो अंकल सैम माइंड सेट है कि गवर्नमेंट कैन ट्रैक यू मोर एंड थिंग्स लाइक दैट। देखिए यार, हम तो कॉमन लोगों की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे यू आर अ गुड सिटीजन, टैक्स पेइंग सिटीजन, एंड उस केस में आपको पैन आधार लिंक करना पड़ेगा, राइट? सो नाउ टैक्स डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? तो अर्लियर फॉर्म 26 यूज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बिकॉज उसमें सारा डेटा फ्लो हो रहा था। बट लास्ट कपल ऑफ ईयर से AIS हैज बिकम इवन मोर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। आई टेल यू व्हाई। तो फॉर्म 26 में तो सिर्फ टैक्स क्रेडिट्स का इंफॉर्मेशन है। नाउ AIS में सारे आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का इंफॉर्मेशन है, राइट? सो जैसे कि आपने म्यूचुअल फंड सेल किए या बाय किए, आपने फॉरेन रेमिटेंसेस किए, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस किए, तो ये सारे ट्रांजैक्शंस आर क्वालिफाइड एज स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। एंड देयर आर फ्यू रिपोर्टिंग एंटिटीज जिनको गवर्नमेंट ने मैंडेट किया है। स्पेसिफाइड एंटिटीज है जैसे आपका बैंक, NBFCs, डिपॉजिटरीज हो गए, राइट, AMCs हो गए। तो दे आर रिक्वायर्ड टू फाइल समथिंग कॉल्ड AIR, एनुअल इन्फॉर्मेशन रिटर्न, जहां पे उन्होंने फॉर्म 61 या 61A करके फॉर्म है, उसके थ्रू ये रिपोर्ट किया है कि भाई विश्वजीत ने म्यूचुअल फंड सेल किए हैं या विश्वजीत ने म्यूचुअल फंड्स परचेस किए हैं।
तो वो इंफॉर्मेशन एआईएस में आ रही है, राइट। नाउ एआईएस में जो भी इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन अगर आपके इनकम टैक्स रिटर्न के साथ मैच नहीं कर रही है, तो वो बहुत ही कॉमन रीजन है नोटिस आने का। नाउ अगर आपने म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन, म्यूचुअल फंड सेल किए हैं, आपने प्रॉपर्टी सेल की है, आपने फॉरेन रेमिटेंसेस किए हैं फॉरेन बैंक अकाउंट में, जो आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में फॉरेन बैंक अकाउंट डिस्क्लोज नहीं किया है, तो दोज आर ऑल द शॉर्ट वेज ऑफ रिसीविंग अ नोटिस। सो प्लीज मेक श्योर के you look at your AIS. Of course, bank documents are very important, especially for people who are getting interest, people who are getting dividend in their bank accounts, right? तो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए, बिकॉज उनका ज्यादातर ट्रांजैक्शंस उनके बैंक स्टेटमेंट से रिफ्लेक्ट होगा। होपफुली हम कैश की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग डिजिटल ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं। तो ज्यादातर ट्रांजैक्शंस उनके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट होंगे, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीएनएल एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए। तो बैंक डॉक्यूमेंट्स प्लीज हैंडी रखें। इनकम डॉक्यूमेंट्स ना फॉर्म 16 आपको आपके एम्प्लॉयर से मिला होगा। फॉर्म 16 है अगर आप फ्रीलांसर है, कंसल्टेंट है, लैंडलॉर्ड है, तो आपको आपके टेनेंट से या आपके कस्टमर से मिला होगा। आपको आपके ब्रोकर से, जैसे कि धन पे, अगर आप जर्नल पे जो नया रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है, अगर जर्नल पे जाएंगे तो आप अपना टैक्स पेनल स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। सो these are all the important income documents. Now, let's see, expense related documents, right? So, if you are planning to claim some of these expenses, now कुछ expenses आप chapter 6 से deductions में claim कर सकते हैं, जैसे कि आपका होम लोन इंटरेस्ट हो गया, एजुकेशन लोन इंटरेस्ट हो गया। कुछ एक्सपेंसेस जैसे कि आपके बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस आप अपने बिजनेस प्रोफेशन के हेड में रिपोर्ट कर सकते हैं, तो मेक श्योर आपके पास वो एक्सपेंस के प्रूफ्स भी हो। अब एक इस साल डिफिकल्ट चीज ये हुई है कि पीपल हु आर ऑप्टिंग फॉर ओल्ड रजीम, अर्लियर आप सिर्फ अमाउंट रिपोर्ट कर रहे थे कि भाई मैंने एलआईसी इंश्योरेंस पॉलिसी इतने में परचेस किया, या मैंने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए ये प्रीमियम पे किया, और मैंने ईएलएसएस में इतना इन्वेस्ट किया, राइट। अब इस साल से आपको इसके सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी है, सपोर्टिंग डिटेल्स भी प्रोवाइड करना है। सो क्या है ये सपोर्टिंग डिटेल्स? सो फॉर एग्जांपल अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसीज की बात करो तो आपको इंश्योरर नेम, पॉलिसी इश्यू डेट हो गया। अगर आप लोन की बात कर रहे हो तो आपको लेंडर का नेम, लोन अकाउंट नंबर, ओरिजिनल लोन अमाउंट, आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट, काफी डिटेल्स इस बार इनकम टैक्स रिटर्न में फर्निश करनी होगी। किसको करनी होगी? जो ओल्ड रिजीम में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहता है एंड ये डिडक्शंस क्लेम करना चाहता है। अगर आप न्यू रिजीम में फाइल कर रहे हो तो नन ऑफ दिस शुड बॉदर यू, ठीक है। सो ये एक्सपेंसेस एंड इनकम डिडक्शंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो गए। नाउ लेट्स वेरी क्विकली ग्लैंस ओवर के इनकम टैक्स कैसे होते हैं इंडिया में। अब प्राइमरीली जो भी कोई फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, आप रिपीट में सुन रहे हो, तो देर आर 5 इनकम हेड्स। नंबर 1 इज सैलरी, आई डोंट थिंक आई हैव टू एक्सप्लेन इट। नंबर 2 इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नाउ मकान कैसे इनकम जनरेट कर सकता है? तो रेंटल इनकम जनरेट कर सकता है, राइट। ऑल्सो अगर आपका मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है, दैट मीन्स आप खुद उसमें रह रहे हो एंड आपने उस पर लोन लिया हुआ है, होम लोन लिया हुआ है, तो उसका जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो आपका वो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है। तो आप उसका लॉस रिपोर्ट कर सकते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न में, उसका बेनिफिट ले सकते हैं, राइट। द थर्ड इनकम हेड इज बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड। नाउ बिजनेस एंड प्रोफेशन, if you are a small cafe owner, freelancer, but also FNO or intraday trader, because that is also considered business profession income. So in that case, you report your profits or losses in BNP, under the BNP head. Capital gains, whenever you sell any capital assets. Now a lot of people come and ask me, मैंने MF म्यूचुअल फंड परचेस की है या मैंने स्टॉक्स परचेस किए, मेरे को टैक्स के बारे में क्या इम्प्लीकेशंस आएंगे? तो आप जब परचेस करते हो तब टैक्स इम्प्लीकेशंस नहीं होते, जब आप सेल करते हो तब होते हैं। ओके, सो इफ यू हैव बीन डूइंग SIP sincerely, then, and if you haven't sold anything, you don't have to worry about capital gains tax. It's only if you sold something you have to worry about capital gains tax. Now, however, there are few things, right? There are कुछ corporate actions है जो नीचे हमने मेंशन किए हुए कि जैसे कि बायबैक हुआ एंड आपने उसमें पार्टिसिपेट किया, या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो वो सारी चीजें आपके इन्वेस्टमेंट्स में से आपके इनकम सोर्सेज है, तो उनको आपको इनकम रिपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में रिपोर्ट होंगे अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। ऑनलाइन गेम विनिंग्स की भाई अभी बात ही नहीं करनी है, बट ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज द लास्ट हेड
which is a catch-all head, right? Jokingly, 10 years ago, 90% of India had income from other sources. Now, as reporting more accurate होता जा रहा है, income tax department के पास data बहुत ज़्यादा accurately आ रहा है, तो अब people are reporting under the current heads. So if you are historically reporting everything under income from other sources, don't do it, please, because now your AIS will clearly identify those income sources and income heads. डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, सैलरी हो गया, म्यूचुअल फंड सेल हो गया, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन हो गया. तो यू कांट जस्ट रिपोर्ट एवरीथिंग अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एनीमोर. ऑलराइट, नाउ let's quickly look at tax rates under new and old regime. Now a lot of people ask, Vishwajit, which regime to choose. तो आई हैव अ स्लाइड इसके बाद जहां पे मैंने थोड़ा डिफरेंट सिचुएशंस लेके एक्सप्लेन करने का ट्राई किया कि किसके लिए कौन सा regime बेटर हो सकता है. बट यहाँ पे व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन इज कि न्यू regime इज सिंपल, लोअर टैक्स रेट्स, no deductions. Old regime is higher tax rates, yes deductions, right? What does that mean? As you can see on the left hand side, new regime में 0 to 3 lakhs nil, old regime में 0 to 2.5 lakhs nil, right? So यहाँ पे benefit है, up to 3 lakh exempt है. Now 3 to 7 lakh is 5%, 2.5 to 5 lakh is 5%, right? So as you can see, up to 7 lakh just 5% tax rate है, जबकि यहाँ पे only up to 5 lakh 5% tax rate है, and so forth, so on, right? So you can take a screenshot of this. I will also put a link to this deck, so you can also refer to it if you are filing on your own. All right. Now there are few caveats also. Number one, कि रिबेट अंडर न्यू रिजीम 7 लाख तक मिलता है, रिबेट अंडर ओल्ड रिजीम सिर्फ 5 लाख तक मिलता है. नाउ सम ऑफ यू विल रेज योर हैंड एंड से कि सॉरी विश्वजीत, 12 लाख तक मिलता है न्यू रिजीम में. रुक जाओ भाई, दैट इज फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर, वी आर टॉकिंग अबाउट लास्ट फाइनेंशियल ईयर. तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अप टू 7 लाख मिलता है. ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन इज कि अगर आप सैलरीड हो तो न्यू रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन इज 75,000 and old regime में it used to be 50,000 rupees, right? So there are few additional benefits under new regime. Okay, all right. Now हमने इनकम हेड्स की बात की, हमने टैक्स रेट्स की बात की, तो ये स्लाइड क्या कर रहा है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है. सो विच इनकम हेड क्या टैक्स रेट पे टैक्स होता है. So when we talk about this slide, we have to understand the concept of slab rate incomes and special rate incomes. क्या मतलब है? Slab rate incomes are the slabs that we saw in the previous slide, जिस पे टैक्स होते हैं, right? So 0 to 3 lakh nil, 3 to 7 lakh 5%, so forth so on. इसको स्लैब रेट्स बोलते हैं, जिसको ऑल्सो प्रोग्रेसिव टैक्स रिजीम बोलते हैं. उसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके टैक्सेस भी बढ़ते जाएंगे. नाउ स्पेशल रेट इनकम्स आर स्पेशल इनकम्स, राइट? दिस आर प्राइमरीली नोटिफाइड इनकम्स जिसको गवर्नमेंट को एनकरेज करना है, इंसेंटिवाइज करना है, राइट? सो कैपिटल गेन्स इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ इट. ये स्पेशल रेट इनकम्स है, ये स्पेशल रेट पे टैक्स होती है. क्यों? बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स कैपिटल मार्केट्स टू थ्राइव, गवर्नमेंट वांट्स लिक्विडिटी इन कैपिटल मार्केट्स. बिजनेसेस के पास पैसा होगा तो फैक्ट्री बनाएंगे, हायरिंग करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, राइट? सो तो स्पेशल रेट इनकम्स, स्पेशली कैपिटल गेन्स आर स्पेशल रेट इनकम्स इन इंडिया, राइट? सो उसमें कुछ बाइफिकेशंस हैं कि भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आर taxed at earlier. They used to be taxed at 10%. When I say earlier, what do I mean? Before 23rd July 2024 अगर आपने सेल किया है तो it was taxed at 10%. Now after 23rd July अगर आपने सेल किया है तो it is taxed at 12.5%. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स रेट भी चेंज हुआ है. अर्लियर इट यूज्ड टू बी 15%, नाउ ये 20% हो गया है. This morning only I was having a conversation with my dad, saying he had a short-term property transaction and he'll have to pay 20%. He was very sad about it. And I told him that if he had read the some of the news around short-term capital gains, he would have planned it better. So कभी-कभी क्या होता है कि if you pay attention to right things, then you can save lot more money. अब यहाँ पे जैसे कि किसी ने 22nd या 23rd जुलाई को सेल किया है तो उनको 5% टैक्स कम पे करना पड़ रहा है कंपेयर टू किसी ने 24 जुलाई को पे किया है, राइट? सो जस्ट दोस काइंड ऑफ थिंग्स. अब ऑफ कोर्स ये बजट में अनाउंस हुआ था तो नोबडी न्यू बिफोर हैंड, राइट? बट वैसे काफी सारे टैक्स डिसीजंस होते हैं, टैक्स एडवांटेज डिसीजंस होते हैं जो अगर आप नॉलेज के साथ ले तो यू कैन सेव लॉट ऑफ मनी. एंड यू नो वी वर्क रियली हार्ड फॉर आवर मनी, सो वी शुड look to save more of it. All right, so now let's go to
This is the old versus new regime comparison slide that I was talking about, right? काफी लोग मेरे को आके पूछते हैं कि विषय मेरे सिचुएशन में कौन सा बेनिफिशियल होगा, एंड इसमें वन शू फिट ऑल पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट्स क्वाइट नुआंस, एंड एज यू कैन सी फ्रॉम दिस स्लाइड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू व्हाई इट इज. सो इसमें फर्स्ट स्लाइड है इज डिफरेंट इनकम बकेट्स, राइट? सो बिकॉज आंसर सारे इनकम बकेट्स के लिए सेम नहीं है, बिकॉज प्रोग्रेसिव टैक्स स्लैब्स है, तो टैक्स रेट्स एंड हेंस टैक्सेबल इनकम एंड हेंस टैक्स पेएबल चेंज होता रहता है. तो मेरा लेफ्ट मोस्ट कॉलम है इज डिफरेंट इनकम बकेट्स. नाउ मेरा सेकंड कॉलम है इज टैक्स इन न्यू रेजिम. तो ये इनकम पे न्यू रेजिम में कितना टैक्स होगा, देन ये इनकम पे ओल्ड रेजिम में कितना टैक्स होगा, एंड देन दिस लास्ट कॉलम इज द इंटरेस्टिंग कॉलम, बिकॉज व्हाट ये कॉलम ये बताने का ट्राई कर रही है कि आपको कितने डिडक्शंस क्लेम करने पड़ेंगे चैप्टर 6A के, जो कि सिर्फ ओल्ड रिजीम में अवेलेबल है. तो आपको कितने अमाउंट के डिडक्शंस क्लेम करने पड़ेंगे फॉर यू टैक्स अंडर ओल्ड रिजीम टू बी लेस देन टैक्स अंडर न्यू रिजीम, right? So I hope I haven't confused you. So let's take few examples. I think let's take 10 lakh rupees का सैलरी. तो यहाँ पे न्यू रिजीम में टैक्स लायबिलिटी है 44,000, ओल्ड रिजीम में टैक्स लायबिलिटी 1,06,000 है, जो कि ऑलमोस्ट डबल है. ना आपको 3.5 लाख रुपए माने 3,50,000 रुपीज के डिडक्शन क्लेम करने पड़ेंगे फॉर यू ओल्ड रिजीम टू बी बेनिफिशियल, राइट? सो अनलेस एंड अंटिल यू आर नॉट प्लानिंग टू क्लेम दैट मेनी डिडक्शंस, new regime is an easy way out, right? It automatically offers you a lot of tax savings. Okay. Also, like I said, कि इस साल से old regime में काफी reporting का झंझट है. So much more data you have to report, right? So if you want to avoid all of that hassle, then you can go for new regime. All right. वैसे you can see 15 lakh का अगर मेरा income है तो मेरा tax liability 1,30,000 है under new regime and 2,57,000 है under old regime. So almost हर जगह पे almost double से ज्यादा है, right? Now, इसमें ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है 4,58,000 पे. दैट मींस यू विल हैव टू क्लेम दैट मेनी डिडक्शंस इन ऑर्डर टू क्लेम इनफ डिडक्शंस कि जहां पे आपका टैक्स अंडर ओल्ड रिजीम इज लेस देन टैक्स अंडर न्यू रिजीम. ऑलराइट, होपफुली क्लियर टू एवरीवन गाइस. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉर्म 10 IEA. ये है इस साल का सबसे अक्यूट पेन पॉइंट, राइट? अब क्यों है ये अक्यूट पेन पॉइंट? फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक और एडिशनल फॉर्म इंट्रोड्यूस किया जो टैक्स पेयर्स को फाइल करना है, राइट? दैट इन इटसेल्फ इज अ पेन पॉइंट कि क्यों हमें मल्टीपल फॉर्म्स फाइल करने हैं, क्यों हम सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करके ये नहीं बता सकते कि भाई हमें न्यू रिजीम या ओल्ड रिजीम में जाना है. एनी हाउ, ऑल दैट आर्ग्यूमेंट्स असाइड, नाउ किसको फाइल करने की जरूरत है? एनीवन हु इज filing ITR 1 or 2, you don't have to worry about Form 10 IA. You are not required to file Form 10 IA. However, if you are somebody who is filing Form ITR 3 or 4, right, which is primarily filed by people having business profession income, then you need to file Form 10 IA, right? Here, who needs to file Form 10 IA? If you are opting, let me backtrack a little bit. Now, starting since I think last couple of years, new regime has become the default regime. So if you want to opt out of new regime and into old regime, and if you are filing Form ITR 3 or 4, you will need to file Form 10 IEA. Who else needs to file it? If you had last year opted out of new regime by filing Form 10 IEA, and this year you want to come back to new regime, then you will have to file Form 10 IEA. Now, इसमें problem क्या हो रहा है कि some people had filed Form 10 IEA last year, that opted out of new regime and into old regime. This year now they plan to continue into old regime. However, they are accidentally filing Form 10 IEA because उनको तो यही पता है कि भाई old regime opt करने के लिए Form 10 IEA फाइल करना है. तो when they are doing it, they are actually indicating to income tax department that they want to switch regime again. And this form, unfortunately, is irreversible. आप इसको discard नहीं कर सकते. That means you will have to file under new regime, even if your tax liability is lower under old regime, and vice versa, right? So, फिर से simplify कर देता हूँ. If you are filing ITR 1 or 2, you don't need to worry about Form 10 IEA. If you are filing ITR 3 or 4, ask these questions. If you are for the first time opting out of new regime and into old regime, then you have to file Form 10 IEA. If you had last year done so and this year you plan to switch the regime, then you have to file Form 10 IEA. If you plan to continue under the same regime, then you don't have to file Form 10 IEA, even when you are filing ITR 3 or 4.
So I hope, guys, it's a little complicated. I hope I was able to simplify it. If not, feel free to reach out, ask questions here. I'll be more than happy to answer them. Now, which ITR form to file in assessment year 25-26? Now, this is one thing that hadn't changed in last few years. But this year, again, there is a small change. Now, what is this change? This change is essentially if your long-term capital gains are less than 1.25 lakh, which long-term capital gains? Long-term capital gains from listed securities where STT is paid. So that could be your ETF, mutual fund, but also your stocks, right? So if you have long-term capital gains from listed securities where STT is paid, and if these capital gains are less than 1.25 lakh, then they are exempt under section 112A. And hence you can report them in ITR 1 and file your ITR 1, right? So I recently only had a customer who came to me because historically last few years से वो file कर रहे थे ITR 2. Now इस साल उनको क्विको ने suggest किया ITR 1. And he sent me a WhatsApp message saying, Vishwajit, it's incorrectly calculating it. And then I had to get on a call and explain to the customer that इस साल investors जिनके capital gains 1.25 lakh से कम है, they can file ITR 1. Now, if you have short-term gains, you can't file ITR 1. If your long-term gains are more than 1.25 lakh, you can't file ITR 1, right? So in that precise condition where your long-term capital gains are less than 1.25, you can file ITR 1. Same goes with ITR 4. Earlier, ITR 4 only covered presumptive taxation scheme along with any other income sources from ITR 1. Now you can also report long-term capital gains up to limit of 1.25 lakh. Okay. Now, ITR 2 is very clear. It is for investors. That means any capital gains, you need to file ITR 2. Any business profession income, you need to file ITR 3. Like I said, ITR 4 is anybody who has business profession but is opting under presumptive taxation scheme. Now, what is presumptive taxation scheme in 30 seconds? If your business turnover is less than 2 crore and you don't mind reporting 6% of your turnover as your profit and pay taxes on it, then you don't need to maintain books of accounts and you can file under presumptive taxation scheme. It's a simpler form. You don't have to have financial statements. Chartered accountant hire karne ki zarurat nahi hai. You can very easily file this one-pager form called ITR 4, right? So that's presumptive taxation scheme. If you are a small profession and if your turnover is less than 1 CR, and if you are willing to claim 50% of it as your income and willing to pay taxes on it, then you can also claim presumptive taxation scheme, right? So guys, see if it fits into your a few things around presumptive taxation scheme is once you opt in and out of it, then you will have to get your books of accounts audited. The other thing is once you opt out, you can never opt back in for 5 years, up to 5 years, right? So make sure that you take all those things into consideration. Now, what are the common mistakes to avoid? Of course, the most obvious one is missing the due date. Don't miss the due date. Selecting the wrong ITR form, you cannot do that on Quicko. You can do it in other places, but not on Quicko. We choose the ITR form for you. Not reconciling data reported in Form 26 and AIS. I said that's a silly mistake now because that information programmatically, the computer systems that will, as soon as you file your return, it will do the side-by-side comparison. And if there is any difference, of course, there is some tolerance. There's a rounding tolerances and things like that. But otherwise, if there is a difference of more than, let's say, 100 rupees, then you will get a notice no matter what, right? So why take those chances? And then once you get a notice, it becomes super expensive because not expensive in terms of just money, but also in terms of headache, stress, time and energy. You have to go to a great length to get that case resolved, right? Of course, there have been few simplification. Now it's faceless, it's online, but it's a hassle nonetheless. Okay, so make sure that you report everything that is in your AIS on your income tax return. Now, non-disclosure of bank accounts, exempt incomes. Of course, I'm not using all my bank accounts. Some of them are dormant. Why do I need to report them on income tax on my income tax return? You need to. It's required by law. Don't ask me why. Exempt incomes, people think they don't have to pay taxes on, hence they don't have to report. Not true again. You have to report exempt income. You have to at least let income tax department know that these are the exempt incomes. Let's say ab ye exempt incomes mein se next year you make an expensive purchase. And then if income tax department comes and asks you,
what are the income sources, then you can very easily furnish your income tax return and you can say, this is the exempt income that I had earned, and I'm using that money to now do other financial transactions, right? So please make sure you report your exempt incomes on your income tax return. What are exempt incomes? I think there are a few, if you remember, there are a few schemes, government tax saving schemes, which fall under exempt category, which means contributions are tax exempt, any income from it is tax exempt, and final redemptions are tax exempt, right? So there are a few interest incomes like that, which are tax exempt. Agriculture income is tax exempt. Like I said, capital gains up to 1.25 lakh is tax exempt, right? So those are a few examples of exempt incomes. There are gratuities and things like that that are tax exempt up to certain limit, right? So make sure that you report them in your income tax return. Now, interest and dividend, oftentimes people give an excuse, it's a very small amount. Why do I have to report in my income tax return? Sorry, again, it goes onto your AIS. Anything that goes on AIS must go in your income tax return. Not reporting dividend income, again, a common mistake. Oftentimes it's a small amount, and hence people overlook it. Earlier maybe आप नहीं फाइल कर रहे थे and वो निकल जा रहा था, बट अभी नहीं होगा. दूसरा चीज कि ऑफन टाइम्स I've been now filing my India taxes for over 10 years. And what I know is, one fact that I know is, कि एक साल निकल गया, that doesn't mean कि वो forever वैसा होगा, number one. And number two, वो जो साल निकल गया था, उसके भी नोटिस आने के चांसेस रहते हैं. Because eventually, when they are able to programmatically analyze your income tax return, and they find that discrepancy, they will send you a notice. So, and जब एक साल का नोटिस आता है ना, तो फिर 3 4 5 साल के स्क्रूटिनी से ओपन होता है. So you don't want to get into all that hassle, right? Right, guys? We all have bank incomes directly हमारे bank accounts में आ रहा है. We want to pay taxes on them. Of course, we want to pay as little as possible, which is why we want to make sure that we do tax saving investments. We claim all possible deductions. We are tax savvy, but we are not tax evaders, right? So make sure that all your incomes are reported in your income tax return. Now, not reporting transactions from all demat accounts. Again, I think people think that एक ही छोटा सा transaction है, एक ही demat account में है, ये मेरे main demat account का मैं report कर दूंगा, but वो demat account का नहीं करूंगा. Again, not a good idea. Improper classification of capital gains. Yes, it's overly complicated to do capital gains nowadays. Hopefully next year it will become simple with with the rates going from 7 different rates to 2 different rates. But otherwise this year it is overly complicated. If you use Quico, we do the classification for you, but just in case you are filing on your own, make sure that you do proper classification. Not disclosing foreign incomes and assets. India has treaty with all the countries that you care about, जहां से data reporting continuously हो रहा है, but between two nations, two countries, two governments. There's an agreement called Direct Tax Avoidance Agreement, जिसके under ये information exchange is part of it. So make sure if you have ESOPs, RSUs, if you're working for multinational corporation, you have Fidelity Net Benefits accounts. If you have been trading through some of the Indian platforms into foreign stock markets, then make sure all of that is reported into your income tax return. And Quico can help you do that, right? And the last thing is failing to e-verify the ITR. Now, you have done everything, but you haven't e-verified your ITR. Now, what is e-verification? After you e-file is not the last step. After you e-file, you have 30 days to e-verify your income tax return, right? So e-verifying is an act through which you are giving consent to income tax department to process your income tax return. E-file करने पे income tax department process नहीं करेगा आपका income tax return, e-verify करने के बाद ही करेगा. So make sure you do e-verification as well. Now, let's very quickly, hopefully all of this was helpful information, but let us now show you how you can file your taxes using Quico. And this is the most fun part, right? Every day, thousands of customers file their returns through Quico, and a lot of them are able to file it, very easily on their own, which is what makes me the most proud, right? So when I started, a lot of people said people won't be able to file their income tax return on their own. It's very complex. There are hundreds of data points, not possible. We are very happy that now every tax season, lakhs of people use Quico to file their income tax return. And it wasn't possible without the broker partners like Dhan. All right, so let's see how you can do it. So what I'll do is I'll very quickly switch to my Dhan account, right? So you all are familiar with your Dhan account. I'm logged into my Dhan account. What I can do is I can go to journal. So let me also show you how you can go to journal. You can click on profile and then you can say journal by Dhan, right? Now, what is journal? Journal is essentially
the reporting platform by Dhan. So you can come and track, of course, your portfolio, your P&L. You can also look at your text P&L. You can get your contract notes and everything, right? So it's super cool. Now, here is a small CTA using which you can start your Quicko journey, right? There's another CTA which is under direct income tax filing, right? So either of those places, if you see it, you can click on it and you can start your tax filing journey using your Dhan account. Now, what does that mean? That means you won't have to sign up on board onto Quicko. We will borrow that information from Dhan using the consent that you provide to us. And then we will also be able to read your text P&L, right? Using that consent. Now, at any given time, you can either come to Dhan or go to Quicko My Account and you can revoke this consent. Until we have this consent, we can help you read some of this data. We can help you calculate your capital gains, calculate your business professional income, and help you file your returns, right? So in the interest of time, I have a very small Figma demo through which I can show you how to file your income tax return. So let me quickly hop on here and I'll very quickly start that journey. All right. So awesome. So let's see. Again, like I was showing you under direct income tax filing, you can click on Quicko and that journey will take you onto Quicko's platform. In between, there is an OAuth consent that got exchanged. Now, as you can see, why customers love Quicko, it's very neatly designed. The product is primarily focused around helping people do good with their money, right? So right now we help people with their taxes. What do we help them with? We help them with saving, paying, and filing their taxes. We also help them track their investments across all their Demat accounts, crypto accounts, etc. Right? But today we're gonna stay focused on filing our income tax return. So I'll start my journey by filing income tax return. Okay. The most preferred choice by customers is to autofill details from income tax department. I would also strongly suggest it. It pretty much, it fast forwards you to 80% completion, right? So I'll choose that, hit on proceed. Once I do that, I have to now connect my income tax account. So let me go ahead and connect my income tax account. I'll choose Aadhaar registered mobile number, hit proceed. I'll enter the OTP, click proceed again, and there we go. So this is a presentation. So as you can see, it will import all your bank accounts, your salary information, your other income sources, deductions, tax credits, everything from income tax department. So here my income tax return is pretty much ready, good to go, right? So I'll use all that information, prepare the income tax return. Now my income tax return is in progress. Now all I have to do is make sure that everything is correctly reported. If there are any outstanding liabilities, I should pay them. In my case, there is a refund here. Great. Next thing I'll show you is how to import your capital gains from your Dhan account, right? So you can click on capital gains, click on add securities, import your investments from your broker app. Yes, I like that. And then all of these brokers we are integrated with, including Dhan, right? So you can choose Dhan, connect. Now my Dhan account is getting connected and all my capital gains are synced here on Quicko, right? So it's categorizing my short-term and long-term gains. And then down here, it shows me the breakdown across different rates, right? So no other text product does this. It's pretty cool for investor traders to use Quicko, right? So now let's look at business professional income, which is what your F&O and intraday incomes. So I'll again choose business profession, trading securities, intraday and F&O. I'll choose my broker app. All right, we'll choose Dhan in this case. Now that my account is connected, it's offering me as a choice, which account do I want to import from? Here we go. I have my F&O and intraday incomes imported as well. In this particular demo, I don't have any intraday trades, but I have F&O trades. So it imported my F&O transactions and also calculated my net P&L, right? Additionally, what Quicko does is also calculates your profit and loss statement, right? So what is your profit and loss statements? At one hand, you have all your incomes. At the other hand, you have all your expenses. And then the summary is your net P&L, right? So your incomes minus your expenses is either your profit or loss. Okay. So that's profit and loss statement. What is balance sheet? Balance sheet is any business has assets and liabilities, right? So
on one hand you have your assets, and at the other hand you have your liabilities. And the reason it is called balance sheet is your assets invariably are equal to your liabilities, right? You might ask me why. So, for example, if you hold, let's say, stocks in your demat account, or open positions in your F&O demat account, right? So those are essentially your assets. Your balance with broker is your asset. But a lot of that money has come from your savings account to your demat account, right? So hence it's a liability on your business. So invariably it matches. Okay. So which is why it's called balance sheet. It needs to balance out with each other. Okay. Now that we have imported all our data, one thing that customers really love is how easy it is to import things like tax credits, right? So in this particular case, I don't have any outstanding tax liability. In fact, I have a refund, so I'm good to go. What I can do is, before I file, I can very quickly glance over all the tax computation. So as you can see here, it shows nicely organized tax computation. In the interest of time, I'll not go into a lot of details. When you file your return, you can explore it on your own. Regime analyzer, again, very nicely compares both the regimes for me. It shows me that new regime is the recommended regime for me. Loss adjustment. If you are a number buff like me, then you can go to loss adjustment and you will see how your taxable capital gains and other taxable incomes were calculated. Okay, folks. Now I'm eager to file my return, so I'll go ahead and click on review and e-file. Since all the information in my income tax return is furnished and everything looks okay, good to go, so I can file my return. We'll click on e-file my return, and that's how easy it is, guys. So my income tax return is filed. I have my acknowledgement number. I can e-verify now. Later, I would suggest you e-verify your income tax return as soon as you file it. That way, you don't have to remember another deadline, which is 30 days from you file your return. Okay, so I'll go ahead and click on e-verify. Again, I have an option to e-verify in two different ways. Let me go ahead and do Aadhaar OTP. Again, it's very convenient. There we go. My income tax return is e-filed. It shows it's also e-verified. Here is my acknowledgement number. Here is summary of my taxes. And then I can also download few supporting documents from Quico, right? So that's how easy it is, guys, to file your income tax return. I know I do this day in, day out, and hence it looks easy to me. Some of you might get stuck. Some of you might have more complicated situations. If that is the case, feel free to reach out to us. Me and my team are constantly responding to customer queries. We are on Twitter. We are on LinkedIn, Instagram, all our social media handles. We continuously respond. You can also reach out to us on help@quico.com, right? So anytime you send an email to help@quico.com, it creates a ticket, assigns it to one of us, and then we go chase that for you, right? So the other great way to go about it is we have something called text Q&A, right? So I'll again go back here. And we have something called text Q&A, right? So let me go to the final slide. All right, here we go. So we have something called text Q&A, right? So you can visit us on Q&A.text. And there's a community that we have built where people can come ask any questions related to taxes. Of course, you can also go to Dhan community and ask questions there as well. We are also answering questions there. So over next 3-4 days, as you file your income tax return, don't feel that you don't have any help. We'll try to best of our abilities. I have two hands. Everybody in my team also has two hands. So how much ever help we can provide, we'll try to provide the help. Okay. So please make sure you file your income tax return before 15th of September. Now, let me see if there are any questions. I hope I was able to cover all the basics of taxation, and you felt confident after this video that you could file your income tax return on your own. All right. With that being said, I'll wish you luck. Happy tax filing. And give us a shout out if you like our products. Give shout out to Dhan for doing this integration and enabling investors and traders to file their taxes through Quico. Awesome. Cheers. Bye-bye. Thank you.
Hello. Hey Tushar. Are you shooting here? Hello. आइडिया रूम में जैसे कि आइडिया वन में Plus one equals to 88.